हाँ जी. What is that work and result if not a self-involution of consciousness in form and a self-evolution out of form so as to actualize some mighty possibility in the universe which it has created? And what is its will in man if not a will to unending life, to unbounded knowledge, to unfettered power? Science itself begins to dream of the physical conquest of death, expresses an insatiable thirst for knowledge, is working out something like a terrestrial omnipotence for humanity. I think science itself नहीं करा था हमने last time है ना, maybe unfettered power से करा हाँ था. हाँ. This is feeling So new. this, हाँ. हाँ, yeah, this is new. वही सोच Yeah, रही थी थोड़ा सा और अगर if you can do तो एक हल्का सा context मिल जाएगा. yeah. So science itself begins to dream of the physical conquest of death, expresses an insatiable thirst for knowledge, is working out something like a terrestrial omnipotence for humanity. Space and time are contracting to the vanishing point in its works, and it strives in 100 ways to make man the master of circumstances and so lighten the fetters of casuality. The idea of limit of the impossible begins to grow a little shadowy, and it appears instead that whatever man constantly wills, he must in the end be able to do, for the consciousness in the race eventually finds the means. So I was watching a documentary, Mission to Pluto, and it was actually amazing to see कि wow, we have actually reached the Pluto. I didn't know that any mission like that has happened. And now after that, not only Pluto, Sun. Can you imagine? Mission to Sun. Have you heard of it? नहीं जाके करेंगे क्या मतलब will they not burn like is there That's the something? thing. That's the thing. So they've been we don't know about these things happening, but they've been Yeah. studying and researching for like maybe 50 years, 40 years, in order to design a probe, like a something that goes around and take pictures of sun and doesn't get melted. And finally, they have now a probe. It's called Parker probe. So based on a scientist's name, they have designed it after many many years of research, and they have sent it to sun billions of miles away, billions. And with like almost lava flowing on its face, Hmm. and it is able to send pictures. Hmm. So वही है कि मतलब जहाँ चाहा वहाँ रहा की बात है ना, मतलब that if we have the will, इवन डेथ की जैसे बात कर रहे हैं फिजिकल Hmm. कॉन्क्वेस्ट, मेडिकल अचीवमेंट्स, ऑल्सो ये कॉस्मेटिक लगती हैं कि somebody something injected to keep you young, but still it is an achievement that one can Hmm. reduce the aging. And Hmm. Yeah. and आप सोचो क्या मतलब what wondrous calculations. मतलब they don't have anything. So now if something happens to the probe near the sun,
They know that they can't do anything because it's so far away, and so they have designed it in a manner that it is in a self mode. After a point when the rockets etc fell off, it's in self mode and it knows how to auto correct itself, and it knows, like जैसे हम we can talk about ourselves, like I know my inner alignment, I can adjust myself. So something like that, that kind of robotics, that if I misalignment, then I immediately correct it. And so far so good. The mission was for 7 years total. I think 6 years have already gone, Acha. and yeah, it's still sending pictures, and that's helping to they were saying that 160 years ago एक solar storm आया था, और उस storm की वजह से, since of course we were not there, or maybe we were there but we don't remember, उस storm की वजह से everything like really fell off, like wires burnt and communication went berserk. तो अब कह रहे हैं कि now that time we were not using internet that much जितना हम आजकल we are based on it. They say, up if that solar storm like that happens, we cannot imagine the impact of it. So if the solar storm happened there, one is able to predict it, जैसे weather predict करते हैं, और उसके जब वहां पे हो रहा है तो उसके 18 hours के बाद अर्थ पे impact होने वाला है. So they can reduce the voltages and produce warnings and etc. so that things are saved. So it is for this purpose that they want, and also just to fascination about sun also, knowing what's happening there. So it's uh, fascinating plus unbelievable that something like this can be achieved by mere calculations, physical calculations, that they know exactly this orbit to target. अच्छा Venus की इतनी gravity है, उससे इसको push मिलेगा. So they have to, like Venus ऐसे जा रहा है moving है ना, Venus moving है, वो जा रहा है, अब वो प्रोब यहाँ से आ रही है, तो उनको बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है कि वो बिल्कुल ऐसे टच करे उसको, और फिर वो टच करती हुई उसकी ग्रेविटी लेते हुए जाए. हु रियली मार्वलस. मतलब इतना दिमाग है हमारे में. एक ये फेज फ्रेज भी है ना कि अरे कर ले, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, है ना, मतलब हाँ. एंड वी डोंट रियलाइज व्हाट या. रॉकेट साइंस इज, उस ये बोलते हुए भी. और अगेन मतलब हैविंग सेड दैट, look at the mind where it can go, where what it can achieve, and yet remain restless. वो कहते हैं ना कि शायद वो अबिदा परवीन ने गाती थी ना कि आसमानिया कुछ करता है ना, उड़ती हुई तो चिड़िया को पकड़ता है, बट अपने अंदर को जाना नहीं. बट दैट्स अवर ट्रूथ, दैट्स अवर ट्रूथ. I think like it was previously said here also that nothing is going waste, है ना? All this questioning, this going against, this overindulgence and materialism. I think it's a gymming of muscles होती है ना, कि just a matter of time when you shift, है ना? Then you are ready. You already have the energy, the capacity, the brains. Yeah. And also some people who go into the space for first time, you may have heard, they actually completely change their perspective when they come back to earth. This has happened with many astronauts working in जैसे space station पे काम कर रहे हैं. And then they look at the horizon, the sun rising and maybe the colors in the sky, and they also see the delicate, that oh my god, earth is so delicate, anything can happen anytime, so better protect it, and then they become environmentalists or something. So yeah, that shift happens. Yeah. So insatiable thirst for knowledge, ये तो है ना, दिखता ही है. Physical conquest of death, we have discussed that often. This is interesting. Terrestrial omnipotence for humanity, na? Terrestrial, because it has to be, from here. Space and time are contracting to the vanishing point in its works. ये मेरे को इतना नहीं रियलाइज हो रहा कि as in they have less significance now than they used to. And it strikes in a hundred. Is that what it says?
कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब कम हो रही है ना, जैसे बड़ी थी। हाँ, जो उनकी इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा थी कि अरे इतनी ज्यादा स्पेस तो अच्छा उसकी अच्छा, कम सी होती जाए। इवन अब जैसे सी दिस टेक्नोलॉजी है ना, जूम, हम्म हम्म इंटरनेट है ना, हम्म स्पेस टाइम हम्म आर हम्म contracting है ना, to the हम्म vanishing point हम्म in its work, मतलब maybe हम्म। must be going towards it because doesn't. और अब इससे ये भी पता लग रहा है व्हाट आइंस्टाइन वुड से, रिलेटिव, कि टाइम भी Hmm. रिलेटिव है, स्पेस भी रिलेटिव है। अदरवाइज एट दैट टाइम वी कुड नॉट बिलीव दैट, बट नाउ Hmm. दैट वी आर एक्चुअली एबल टू सी दैट स्पेस इज ऑल्सो रिलेटिव एंड टाइम इज ऑल्सो, देर इज नो सॉलिडिटी कि अगर ये Yeah. 5 साल का पीरियड इधर है तो वो 5 साल का उधर भी है, ऐसा नहीं है, वो सॉलिडिटी नहीं है। Hmm. या प्लीज गो अहेड। नहीं नहीं, एक बार फिर से बोलना, आपने मैं लास्ट चीज सुनी नहीं। नहीं, in the sense that there is a very famous example, na, twin example in Einstein theory, that if you, there are twins, one Hmm. stays on Earth and one travels Yeah. out in space. Yeah. So Yeah. the one who is traveling out in space and comes Hmm. back to Earth, Hmm. that Hmm. one ages lesser. Faster ना? No, Lesser. हाँ, मतलब Okay. जो अर्थ पे एक ही जगह पे रुका हुआ है, Okay. that one ages faster than the one who is Okay. traveling. Okay. तो उसके लिए वो टाइम उतनी स्पीड से नहीं कटा, उसके लिए ओ माय गॉड, आई हैव लाइक सो मच टू डू एंड सो मच टू अचीव। Yeah. बट Yeah. जो अर्थ पे है उसके लिए एजिंग इज फास्ट, दैट्स व्हाट आई रिमेम्बर। Okay. या And it strives in 100 ways to make man the master of circumstances and so lighten the fetters of casuality. Science की बात हो रही है ना, हाँ, कि that's what this is, it's doing, right? Striving in 100 ways. सो The I, कॉजेलिटी वुड मीन yeah, द, causality. हाँ, हाँ. कॉजेज एंड कंडीशंस की, let lessen the, मतलब the now the causes and conditions don't bind it that much that they used to bind. हम्म. या जैसे वोल्केनो इरप्शंस हुए, इतने लोग मर गए, बट अब पहले से ही पता चल जाता है तो वेकेट कर देते हैं, है ना, मतलब अभी जो आप एग्जांपल भी शेयर कर रहे थे, मूविंग अहेड ऑफ टाइम, है ना, द आइडिया ऑफ लिमिट ऑफ द इम्पॉसिबल begins to grow a little shadowy, and it appears instead that whatever man constantly wills, he must in the end be able to do. For the consciousness in the race eventually finds the means. How beautiful. Yeah, exactly what you were sharing. That's such a perfect example for that. So, yeah, anything? अमेजिंग टू से कि इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब अच्छा हाँ. सन, सन पे मतलब कोई कुछ साल पहले सन की बात करो, मतलब कुछ साल नहीं, अब हाँ. 6 साल तो बोल नहीं नहीं, सकते अब क्योंकि छह जैसे इन द साल सेंस, अगर आप देखो ना, अगर जैसे आप, यू एंड आई, हम्म वी आर नॉट अनरेड, है ना, वी आर हम्म नॉट ऑल, मतलब काफी जगहों पे हैं, हम्म बट वी डिडंट इवन नो दिस इज हैपनिंग, है ना, हम्म जैसे अब जब एटॉमिक बॉम्ब बन रहा होगा तो पीपल आर नॉट अवेयर, है ना, जब हुआ तो पता चला, और क्या हम्म क्या क्या रिसर्च हो रही है, क्या फ्रीजिंग ऑफ द सेल्स, फ्रीजिंग ऑफ द बॉडीज, है ना, कि हम्म आफ्टर आफ्टर बाद में आके पता नहीं रिवाइव कर देंगे, कि अम्बिलिकल कॉर्ड का कितना ज्यादा आजकल ये जो हो रहा है, इतना मनी दे आर मिंटिंग इन द होप के things will change, and we don't even know what's happening. It's amazing कि why is it not front page news, मतलब वैसे भी हम भी, मतलब क्या पता चलता हमें एक्चुअली अपने वही है ना से. कि देर आर ओनली अ फ्यू ब्रेन्स और माइंड्स हु आर ट्रूली ट्रूली इंटरेस्टेड इन साइंस, है ना, मतलब इन हम्म. थर्स्ट फॉर नॉलेज। मोस्टली तो Yeah. हम कीचड़ में अपने आप को रखते हैं ना, तो Yeah. मसाला चाहिए होता है, तो अब Yeah. न्यूज़पेपर्स मोस्टली, साइंस का अगर सेक्शन भी हाँ. होगा तो सुनो आधा हाँ. से आधा पेज होगा साइंस का। बट ऐसा नहीं है कि साइंस 10 11 में सिर्फ पेज आधा पे. या हाँ. हाँ. मतलब या. साइंस आप पूरा 1 पेपर भर दो साइंस से वो भी कम है, हाँ. बट चाहिए ही हाँ. नहीं, मुझे तो मसाला चाहिए भाई, तो लो या. मसाला। मतलब ये न्यूज इतनी नहीं बिकेगी कि द थिंग हैज गॉन ऑन सन, लाइक नियर सन, बट ये ज्यादा बिकेगी कि सन वाला साइंटिस्ट को गोली मार दी, यू नो, या फॉर एग्जांपल, सॉरी, लाइक काइंड्स ना, ट्रू ट्रू मतलब. ट्रू, वेरी ट्रू। या. या फिर मिशन फेल हो गया, आप देखना वो मिशन कितना फेल. बिकता है, हाँ. हाँ. बहुत बिकता है। हाँ. चैलेंजर डिजास्टर, एवरीबडी हाँ. हाँ. रिमेम्बर्स। मिशन टू हाँ. सन हाँ. नोबडी रिमेम्बर्स। या. मतलब वो एज इफ देयर इज अ स्टिकीनेस टुवर्ड्स दीज थिंग्स, या. या.
It is. हाँ, मतलब मिशन टू सन 6 ईयर से कॉन्टिन्यूसली सक्सेसफुल चल रहा है। किसी Hmm. को होश ही नहीं है, और वो प्रोब जाती है ऊपर, गिर जाती है, सबको पता है। Yeah. Yeah. अमेजिंग। Hmm. It is not in the individual that this omnipotence expresses itself, but the collective, will of mankind that works out with the individual as a means. Nice. And yet, when we look more deeply, it is not any conscious will of the collectivity, but a super conscious might that uses the individual as a center and means the collectivity as a condition and field. I'm just reminded of Sri Aurobindo's, that whole conversation in the jail, how he was told that you are not anybody special, right? Like if it's you don't agree, there are 10 people right here, kind of, in the jail that I can give the task to if you don't want it or whatever, right? Yeah. काफी ऐसे लग रहा है हाउ डज वन इवन पेन समथिंग लाइक दिस, है ना? ये पूरे उसमें लगता जा रहा है कि सोच सकते हैं बट लिख कैसे पा रहे हैं। या तो ऐसा लगता है पहले इंडिविजुअल था बट इंडिविजुअल नहीं है, फिर कलेक्टिव विल है, फिर कलेक्टिव विल नहीं है, रादर एक माइटी सुपर कॉन्शियस whatever, है ना, सुपर कॉन्शियस माइट दैट यूजेस द इंडिविजुअल एज अ सेंटर। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दिस, है ना, मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिवाइन, कि तुम खुद कर रहे हो so that the job becomes easier. Yeah. सो वही है, मतलब आई थिंक जहाँ तक आई फील दैट ईच वन ऑफ अस, Mm. हमको एक्टिवली पता हो कि नहीं पता हो, डजेंट मैटर, Mm. बट ईच वन ऑफ अस इज बीइंग यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट राइट नाउ। Mm. Mm. मतलब मे बी very simple little things, somebody maybe good ideas, somebody maybe good Mm. calculations. So we are all instruments whether we Mm. agree to it or not. Mm. All Mm. that I can do is to nurture nurture myself, continue the maintenance of the instrument, correct the defects, जैसे ट्यूनिंग कहते हैं ना, इनफैक्ट वो वाला जो है ना, हाँ, जो कबीर जी का ये गाना है, ये तन ठाठ तंबूरे का, Mm. सुना है आपने? आपने सुना है? हाँ। हाँ, तो उसमें वो है कि एचत तार मरोड़त खूंटी, जैसे ट्यूनिंग Mm. करते हैं ना, लाइक Mm. दैट ही सेज, एचत तार, इसको खींचा एंड मरोड़त खूंटी, Mm. निकसत राग हजूरे का। सो Mm. इट सिंग्स ऑफ द लॉर्ड व्हेन यू ट्यून इट परफेक्टली। हाउ Mm. नाइस। Mm. Mm. एंड द अनट्यूनिंग कैन हैपन एनी टाइम, आई थिंक दैट इज द कैच। Yeah. Yeah. क्योंकि दिस आई Yeah. रिमेंबर बिकॉज इवन पीपल लाइक म्यूजिशियंस, इन you see that, oh my god, what are they singing, how are they singing like that, huh? Mm. And the moment they are not singing, they are just regular ordinary Yeah. people. You don't want to be near You don't them. want to be with, Yeah. Yeah. है ना, अमेजिंग। Yeah, it's amazing. हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि somebody who could be, who can contain so much beauty, like हम्म। somebody through which so much grace seem to हम्म। be flowing, that he'll be like I don't know, हाँ, मतलब ये वही it's good to have to see this, है ना, हम्म। कि yeah, it's so tough to be हम्म। there and be fully, है ना, मतलब to become a nanak, to become a कबीर, हम्म। बोल भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, जी भी रहे हैं, हो, है ना, गा भी रहे हैं। गा भी रहे हैं। हाँ। या आई थिंक हम्म। वही बात दिख रही है इसमें, जैसे कि जो मेरा गाने वाला इंस्ट्रूमेंट है, गाने का हम्म। इंटेलेक्ट समझने का, हम्म। वो सब हम्म। उसकी ट्यूनिंग में कर रही हूँ, उस पर मैं एफर्ट डाल हम्म। रही हूँ। बट जो मेंटल इमोशनल इंस्ट्रूमेंट है, स्टोरी लाइंस इन द हम्म। हेड, लोगों के बारे में हम्म। गॉसिप करना, जो भी, उसको, उस पर मेरा कोई ध्यान नहीं है। आई फील हम्म। वेरी सेटिस्फाइड विद दैट
particular tuning itself. So the moment I fall back to the other zone, I am actually, well, one can say it's ugliness in compared to that beauty which I saw in Mm-hmm. myself. It's ugliness. Yeah. Great point. मतलब, yeah, this contrast. And ये जो tuning भी है, I think I'd shared with you that after the NDE, the first time I started reciting say general mantra जैसे ओम भूर्भुवः कर दिया prayer meeting के बाद and all, तो it feels like, is this voice coming from inside me? Matlab, it doesn't feel that I know that voice, like doesn't seem to be belonging to the one I call my, as myself. So it's great to see, that thing so right there कि कहाँ से आ रही है पता नहीं, but आ रही है और अच्छी लग रही है times, huh? Yeah, yeah. उसमें ये भी है ना कि मतलब many a times, it most of the times it can happen, Mm, since we are all imperfect all the time, है ना, मतलब moving mm, towards mm, perfection, but yet with so many mm, weakness, mm, and the ego mm, is always there to pop up, है ना. mm, तो होता क्या है कि the singing happens, this जो mm, आप कह रहे हो, something from above gets channeled, and mm, some mm, beauty harmony expresses itself. mm, But then mm, because the ego is always ready to mm, kind of mm, कब्जा कहते हैं ना उस पे करने के लिए, mm, and it mm, claims that, oh, I did that. और उसमें mm, you develop now a sense of mm, individuality कि this belongs to me. mm, I am the possessor of that. yeah, Or yeah, if we are not careful, that beauty can mm, actually get um, tainted. जैसे कबीर कहते हैं ना, चदरिया मैंने तो भी साफ रखी. तो yeah, मतलब that gets tainted, even that beauty, with the stamp of ego, if I can say. Almost like that. yeah. I think again it's a trap, and even after like huge challenges in which the person could have just gone, right? And they come to the other side, and suddenly after some time, it's like you see what I did. Yeah, yeah. एंड मदर सेज कि मदर कहती है कि जैसे तुमको लगता है हेलीकॉप्टर काम कर रहा है, तुमको लगता है उसकी मशीनरी Mm. काम कर रही है, तुमको लगता है Yeah, दवाई काम कर रही है. yeah, yeah, शी सेज yeah, द ओनली थिंग दैट वर्क्स इज ग्रेस. yeah, yeah, It can work through helicopter techniques, yeah, whatever. yeah, yeah, But we don't see it that way, ना. मतलब मुझे yeah, लगता है, look, I designed that helicopter. yeah, 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 exactly. और आप मानोगे नहीं, आई वॉज अगेन रेफरिंग टू दैट मिशन ना. तो इन द बिगिनिंग व्हेन, so there was some, I think Russia is also too much into space Mm-hmm, aeronautics, na? So they were mm-hmm, sending some probe to somewhere, and it was like a successful going and coming. Like they wanted to mm-hmm, send man out in space. They mm-hmm, sent the man, it came back. Like ज़्यादा दूर तक mm-hmm, नहीं गए, थोड़ा दूर तक गए, फिर वापस आ गए. When America saw this happening, it actually went berserk कि oh my god, Russia is going to reach first, something like that. हुआ क्या mm-hmm. कि ये होते ही उन्होंने कहा नहीं, हमको बनाना ही बनाना है, हमको पहले बनाना है, उससे पहले बनाना है. बिकॉज ऑफ दैट जल्दबाजी, दे स्पॉइल्ड सो मेनी मिशंस. आप सोचो, मतलब हाउ द यूनिवर्स टेल्स अस विद दीज सिग्नल्स दैट डोंट एक्ट थ्रू द ईगो. It spoiled so many missions, and many lives were at stake because of that. And then finally, when these disasters happened, then this thought, नहीं अब तो आराम से करना है काम, तो ऐसे समझ आ गई. And then they took time to develop something which has to be perfect, that it would not go here or there. And this happens with us individuals, है ना, कि अरे वो पहले कैसे कर सकता है, मुझे करना है. And then the universe does give us examples and pointers कि not going the right way, not going the right way. Some accident happens, something happens. I think इसमें even if the other is not there, like you were comparing अभी, है ना, कई बार just it feels कि बस करना है ना, मतलब just feels कि अच्छा, मतलब हमें भी उसमें भी कुछ comparison होगा कि ये timeline होनी चाहिए या ये होना चाहिए या I should be hitting the ground running, है ना, and you seem yourself just getting, जैसे होता है ना कि दिमाग का भार बना के
you could be doing, but then एकदम से you realize that Hmm. yeah, मतलब, again, it's hard to say what is a balance or what is the right thing, Hmm. but this thing that don't get ahead of yourself, मतलब, I mean, there is something that you have to do, and Hmm. yet when it becomes हाँ. like again, जैसे ego का ही जब वो बन Hmm. जाता है कि दिखाना है, करके दिखाना है, ये Yeah, yeah, करना है, then it gets a bit yeah. thing, and then you see it and you're like, Hmm. एक लंबी No, सांस ली, I think it was a beautiful pointer ना. It is beautiful pointer हाँ from the हाँ universe कि इस सेंस में हाँ नहीं करना है जिस सेंस में तुम कर हाँ रहे हो, हाँ, या है ना? तो अब जिस सेंस हाँ में मैं कर रही हूँ, मैं इस सेंस में कर रही हूँ, ओके, हाँ स्पेस, हाँ एंड वी हैव हाँ टू परफेक्ट द इंस्ट्रूमेंट ब्यूटिफुली. हाँ 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 अब ये नहीं कि रशिया पहले कर लेगा कि कौन पहले, हाँ क्योंकि हाँ उसका मैंने भोग लिया, तो वो भोगना जरूरी या था. या Yeah. So again, helps us purify our intentions, again and या again. बिकॉज एक्चुअली इतना कुछ दे के करा भी, Hmm. तो करा भी क्या है ना, Hmm. मतलब yeah. Hmm. जैसे इवन जैसे दैट डे वी वर डिस्कसिंग द एटम बॉम्ब, है ना, Hmm. 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 and there's still so much debate that goes on, that whether they claim, US claimed it was really good, right, because it stopped the world war, Hmm. but what it did to Japan as a, like, because we are all one, which Hmm. we don't, okay, was it worth it, Hmm. and they say yes, and obviously Hmm. Japan say, Japan says no, so Hmm. what am I doing and at what price, Hmm. yeah. इवन मतलब आई ऑल्सो वैसे डोंट अंडरस्टैंड, जैसे आप बोलते हैं कि जितना वॉर पे स्पेंड हो रहा है, या जितना मे बी, है ना, ये इवन स्पेस पे स्पेंड हो रहा है ना, बिलियंस Hmm. बिलियंस ऑफ Hmm. डॉलर्स, और अर्थ पे अभी क्या हाल है ना, मतलब एज एन इट फील्स लाइक, बट आई डोंट नो, मतलब उसका कोई आंसर नहीं है, Hmm. but it's an interesting thought that comes, sometimes, that is it all right, Yeah. and yet it must be. I mean, that's why it's happening. Yeah. नो बट डेफिनेटली कि जितना मनी हम स्पेंड करते हैं आर्म्स में, वेपन्स में, Mm. उतना अगर पावर्टी, एजुकेशन और इस सब पे स्पेंड करें, Mm. तो Mm. ऑब्वियसली थिंग्स वुड चेंज. जैसे आप बट देखो स्पेस का भी, जैसे अगर आप ये प्लैनेट सन वाला, नॉट प्लैनेट सन, प्लूटो था या सन का था, जैसे ही समझ लो अभी 150 ईयर्स के बाद आ जाता है एक और स्टॉर्म, है ना, इन इट कॉजेस व्हाटएवर हैपेंस, बट वही फंडिंग अगर अर्थ को और कुछ करने में मेंटेन हो, या फिर वो सस्टेनेबल, या है ना, मतलब टू कॉम्बैट पॉवर्टी और व्हाटएवर, आई डोंट नो, मतलब इतना भी नहीं पता है, तो वो quality of life for more people for the 150 years, it sounds so much better, and then destroy हो गया तो हो गया, है ना, मतलब एटलीस्ट जब जिए तो, या बट आई थिंक लाइक दे से एवरीथिंग इज एवरीथिंग इम्पोर्टेंट, है हैज, ना, हाँ, मतलब या नॉट, मतलब मुझे लगता है कि हम इस सेंस में देख सकते हैं, जैसे आई थिंक मदर का ये कि जैसे डिवाइन डज नॉट लेट गो एनीथिंग वेस्ट. तो अगर मैं अपनी ईगो कॉन्शियसनेस से भी किसी को खाना दे रही हूँ, और मेरे में बहुत मैं भाव है कि मैं दे रही हूँ, मैं दे रही हूँ, उससे फायदा तो हो गया ना, खाना तो मिल गया या किसी को. या तो ये ऑलमोस्ट वही वाली बात है कि चलो बेशक उससे ही किया तुमने, हाँ लेकिन हाँ उससे भी काफ़ी चीज़ें हो गई विच हेल्प्ड एंड सर्व्ड मेनी मेनी पीपल. और ये सावित्री में ये पॉइंट भी था, इफ यू रिमेम्बर, एक में कि दैट द मैन, it harnesses, it feels that it has been able to harness the powers of nature like we are doing, like space, time, and water energy, solar energy, huh? But still nature is the boss, because if nature goes berserk, all the technology now fails. या यहाँ पे ना नियाग्रा फॉल्स जो है ना, काफी बड़ा फॉल्स है, उसमें देयर इज अ अट्रैक्शन कॉल्ड बिहाइंड द फॉल्स, तो उसमें दे आर क्रिएटेड अ टनल, लाइक बिग टनल विच टेक्स यू बिहाइंड द फॉल्स, कि आप पीछे हो और फॉल्स आपके सामने से वो हो रही है, और देयर इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन सी, वेयर यू कैन एक्सपीरियंस इट, बट मतलब वहां पे इन अ सेकेंड यू रियलाइज दैट ओ माय गॉड, लाइक द फोर्स ऑफ योर नेचर which we talk about. Okay, 1 second and you're gone, right? Like, and we all know that. And yet to be in that space
the strength, the width, the height, say of a mountain, of an ocean, of a volcano, of I don't know, like earthquake. It's just या amazing. मतलब एक आंधी आई थी उस दिन, मैंने आपको बताया हाँ सर। हाँ हाँ मतलब एक आंधी में इतनी सारी चीजें मतलब गॉट yeah डिस्ट्रक्टेड। yeah ट्रीज गिरे पड़े हैं, ट्रांसफॉर्मर्स फट रहे हैं, फैल रहे, मतलब अब बेशक ट्रांसफॉर्मर इज अ माइटी इन्वेंशन, बट व्हाट इज इट इन फ्रंट ऑफ एन आंधी? yeah true. गुड टू सी अवर लिटिलनेस, है ना, मतलब फ्रॉम Mm, टाइम टू टाइम, नो मैटर हाउ फार वी गो। अगेन विद द स्पेस साइंटिस्ट दे से दैट, जैसे आईएसएस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जो बाहर लटक लटक के जैसे दिखाते हैं ना काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी दे आर ऑलवेज एट द रिस्क ऑफ रेडिएशन हजार्ड, क्योंकि वो जो सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं वो इतने कभी कभी स्ट्रांग होते हैं दैट दे, सो दे हैव बीन टोल्ड कि अच्छा अब अंदर चले जाओ, क्योंकि अब यू कांट। और जैसे सन पे भी मिशन गया, इट्स अनमैन्ड मिशन, बिकॉज मैन कैन नॉट टॉलरेट दैट मच yeah, yeah, रेडिएशन। yeah, yeah. What is this but the God in man, the infinite identity, the multitudinous unity, the omniscient, the omnipotent, who having made man in his own image, with the ego as a center of working, with the race, the collective Narayana, the Vismanava, Visvama, Visvamana, विश्व Vamana, मानवा। आप अंग्रेज Vishwamanava, हो गए हो, yeah, सुनो। Vishwamanava, as the mold and circumscription seeks to express in them some image of the unity, omniscience, omnipotence, which are the self conception of the divine. I think self explanatory kind है ना, हम बोलते रहते हैं मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, and what is this but the God in man, right? Of course, infinite identity, multitudinous unity, omniscient, omnipresent, who having made man in his own image. Maybe how interesting the trick, na? With the ego as the center of working, with the race, this collective, yeah, seeks to express in them some image of the unity, which are the self-conception, which are the self-conception of the divine. It ends with a question mark. That's interesting. सो आई थिंक ये है ना, यहाँ से है ना, व्हाट इज दिस, हाँ तो वही वाला हाँ चल रहा है ना। yeah. But what is this but the God? तो ये तो आंसर भी हो गया ना साथ में. It's not what is this question. बट ये कुछ इसको, और नहीं है ना इसमें, मतलब हाँ, yeah. नहीं It's बट, interesting to see the question हाँ mark. हाँ हाँ, बट थोड़ा आश्चर्य से पूछा जा रहा है, हाँ, हाँ exactly कि एक्सक्लेमेशन हाँ. मार्क, श्योरबिंदु। हे भगवान, वापस ले लो. Why? God can be a friend and companion in humor. कहाँ है वो जिन्होंने भी हेल्प कराई लाइफ डिवाइन को एडिट करने में? आई थिंक है तो क्वेश्चन ही, पूरा क्वेश्चन ही है, क्योंकि आई एम वंडरिंग व्हाट इज दिस इफ नॉट दिस, सो इट्स हाँ लाइक हाँ अ क्वेश्चन। हाँ, yeah, मतलब it's not
a question, it's like a wonderment, है ना कि वंडरमेंट, हाँ 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 तो यार to give that feel हाँ या अगर अभी देखते तो कुछ emojis डाल देते हैं मैं ना हाँ surprise exactly, आपको and कोई one can nowadays use even, well, I've used in my emails earlier, not now, both exclamation and अच्छा question mark at ओके once. I've been using it for ओके quite some time. अच्छा ओके हाँ हाँ मैंने हाँ, नाइस हाँ कि क्वेश्चन भी लगा दिया साथ में और एक्सक्लेमेशन भी, की हैरानी भी, हम्म और मतलब बट आई हम्म आई थिंक यहाँ पे इसी से काम चल रहा है. हम्म How smart we think we are. या Yeah. So but his anyways, हाँ smartness also is him expressing that smartness है ना yeah, तो just तो take अब तो that in बनता your है, stride अब हाँ तो अब तो बनता है. बनता है या So this wanting to cross thresholds again and again है ना हम्म उसमें, if मतलब जैसे अगर कोई स्पेशली सीन इन, जैसे लिमिट आती है ना, जैसे मान लो आई इफ आई लूज माई हैंड और लूज माई लेग, द मोमेंट आई फील लिमिटेड, आई फील नो 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 नो, आई नो दैट आई कैन डू दिस, आई नो दैट आई कैन डू दिस. सो वी हैव मैराथन्स ऑफ पीपल who are हम्म physically, you know, हम्म challenged yet able to run so fast, हम्म amazing, with either with an artificial leg or how, you know, and artists who are drawing with their and painting with their feet, for example, है ना, मतलब वो बाउंड्री को बाउंड्री नहीं मानना, because somewhere there is this knowing that I am infinite, I can cross this little boundary. वो जो एक बंदा है, you know, I was long time I read somebody who went deep down in the sea, or maybe in the water, not precisely the sea, and held his breath for a very very long time without any support. कुछ नहीं है उसके पास, ऑक्सीजन कुछ नहीं है, but he's been practicing this for a long time, and without slowing the heartbeat, slowing everything, and remaining without breath for a long time deep in the water. So this constant, I think, breaking of barriers, and uh, not settling down that okay, this is me, I'm more, I am more, I am more, I am more. अच्छा एवरेस्ट हो गया तो चलो और उससे ऊपर. ये अपने में एक स्ट्रेंज वो है कि whenever something happens like bigger than or different than my norms, I just categorize them as exceptions to the rule. I don't feel one with them. I don't take them on. I just say कि अरे है ना this is ये तो अरे उसने कर लिया वो तो exception था. Even with death, I've seen the same phenomena है ना कि you don't now it, you just say कि okay you know it's other, it's just out there not here. Yeah, I don't see that as a human thing, like even in achievements है ना in rocket science जैसे हम बोलते हैं it's not like जैसे what if every time something like this happens I feel that rise in consciousness है ना how amazing that would be कि you know my fellow human did it and I did it, that mean like the same consciousness. Yeah. I think वो ये that this shift has to be practiced. जैसे वो श्री Yeah. अरविंदो का जो एग्जाम्पल देवदत्त और हाँ हरिश्चंद्र हाँ वाला उसी है ना, से ही हाँ हाँ, हाँ that तो उसमें would अगर मैं be प्रैक्टिस नहीं करूं, और वो बड़ी खूबी से ये कह रहे हैं कि जब मैं हरिश्चंद्र के सक्सेस में खुश हो रहा हूँ, तो मैं हरिश्चंद्र को आगे नहीं रख रहा, तुम्हें लग रहा है कि मैं हाँ हाँ हरिश्चंद्र को आगे रख रहा हूँ, यू आर द हाँ वन और वट एवर प्रेशियस वन. हाँ I am putting my true self in front. I am identifying with the true self because the same true self is in Harishchandra. So when I am taking delight in his happiness or success, I am identified with my true self, that which feels expanded when anything happens out there. So it's not putting other first, it's actually putting the true consciousness first rather than the ego or separate consciousness first.
which I'm mostly doing, feeling jealous. When I'm feeling jealous, I'm actually by default, I'm putting the ego self first. That, see, this is me, limited, separate self, who is not very happy now that you have got it. So I'm identifying with the ego consciousness, and which comes to us by default. Somehow the arrangement is like that. So if I have to identify, as mother says in prayers and meditations, है ना, identify with the true consciousness. So that for that I have to change my habit of identifying with the smaller self. Yeah, but I'm just saying that again and again it's coming out that the things that I'm doing under the pretext of being intelligent are actually very stupid, है ना? In the bigger picture, अभी भी जैसे मैं अपने आप को एकदम से लिमिट कर लेती हूँ, है ना? And just call these as exceptions. मेरे से नहीं, मेरा तो इससे कोई लेना देना है ही नहीं. Yes, I call okay, I'm intelligent. But again, it's limiting me, मतलब मुझे Yeah. अपनी लिमिटलेसनेस बर्दाश्त नहीं है ना, मतलब ना उसका अंदाजा है, ना उसकी तरफ जाना है, ना कोई बोल रहा है तो मैं सुनूं, या कोई बिल्कुल कर रहा है तो मैं भी मानूं, है ना, ये बिल्कुल बार बार इट्स काइंड ऑफ. बिल्कुल. I remember during the time of ये जो whatever disease diagnosis and all that, I used to have a conversation once, conversation I'm remembering, with somebody, not naming, and I was sharing that, see, this lady, for example, cured her cancer through I don't know what, Yeah, and then this was being said that ये तो, it's like a rare thing, rare and thing, as you said, that I can't do that, I can't be there. कि वो तो जीनियस है ना, उसको जीनियस बोला और आपने उसको अलग कर दिया. हाँ ये सोचने के बजाय कि वो जीनियस, एज यू सेइंग, वो जीनियस है तो हाँ मेरे में भी तो जीनियस पोटेंशियल है, आई कैन आल्सो डू हाँ. समथिंग. आई थिंक लाइक एपी सेज ना कि अगर ये बोलूंगा फिर तो मेहनत करनी मेहनत पड़ेगी. करनी पड़ेगी, या हाँ. या And the other day I was also talking to someone, again, when we had a little bit of conversation, I told him that I think you are thinking too much. और पता लगा कि right now he is not working. So much analyzing, so much. मैंने कहा, go find a center close to you and offer yourself. So much of enthusiasm you have, so much of energy you have. So all that energy, if not going into action, na, it just pends up in the head and गोल. अच्छा, वो बंदा ये सोचता है, क्या ये ठीक है? वो बंदा, अरे भैया काम कर लो थोड़ा सा, इतनी एनर्जी है. So, and we think, और होता क्या है कि घर बैठे बैठे ना, if we too much spiritualize and analyze in the head, which has its own importance but it can go overboard also, तो उसमें हमको लगने लग जाता है कि मेरा तो हो गया, इनका कब होगा. बट when we when we get down to action, एक चाय भी किसी को पकड़ानी होती है, you realize that, oh my god, I don't know, first of all, how to make a proper tea. Secondly, I don't know how to serve, and I'm boasting and claiming, है ना, कि क्या क्या हो गया. क्योंकि एक्शन के लिए तुम्हें हिलना पड़ेगा, वही कंफर्ट जोन की बात आ जाती है ना, कि घर से निकलना, हाय कपड़े पहनो, किसी को मेल लिखो. एंड आई वाज आल्सो थिंकिंग, ये मेरे को पहले यूएस में भी कई बार ऐसे फील हुआ कि व्हेन यू आर विदाउट अ जॉब, say finding a job or finding a good fit or kind of life with job seems like कहाँ है, मतलब it seems like totally disconnected and don't know how that would happen. But maybe, I don't know, 1 week in a job and the grace and the magic and thing, it just disappears. It's just like, अरे हाँ मैं तो इसी के लिए पैदा हुआ था, मतलब again that me, like I'd shared in the US, I had felt that then you're just cribbing. Okay, from being like I'm jobless, if भगवान बस job मिल जाए, to just going to cribbing कि my God कितना hard है. It doesn't take much. सेम एवरीवेयर, मतलब Same everywhere. again a relative, has a job, complaining, changes the job, so complain. I think this also makes us realize कि complain I can anywhere do,
no matter how beautiful the situation is. And relaxation and enjoyment and progress also I can do anywhere, no matter how difficult and worse the situation is. Yeah. Yeah, all relative. Yeah. और ये है कि मुझे लगता है कि ये संकल्प थोड़ा बार बार रीइटरेट करना होता है, जैसे लोग करते हैं ना, मतलब आफ्टर 20 years of marriage they remarriage and repeat the vows. I'm sorry to take that example. Yeah. So I feel that to me, married to myself, to me this sankalp has to be taken every time. You know, it needs to be reminded, it needs to be rejuvenated, because lethargy sinks in, inertia sinks in, people's commentary going on, you know, people trying to influence you in certain way that no, that is not right, this what I'm saying is right, that sinks in, that drowns you down. So this reiteration, no matter if I have been shown a beautiful glimpse that see what is possible for you, I've been shown, but because the influences are so dark and so, I would say, grand, you know, that everywhere I'm hearing the same voices that give money importance, give money importance, this is, so I have to reiterate these vows to myself, you know, when I know what to give priority to. तो उसको, yeah, I think that refreshing, reminding, constant work. Because if I don't do it for some time, I see that I sink into the older zones again, feel heavy, feel lost, abandoned, lose my purpose, lose my vision immediately. And then if somebody points at, you know, I can come back to it again. But yeah, the losing doesn't take much effort, the keeping in alignment takes more effort. So ये क्वेश्चन That, रखें या um, करेक्शन करवाएं? जस्ट किड, गो अहेड प्लीज. that which is immortal in mortals is a god and established inwardly as an energy working out in our divine power. It is this vast cosmic impulse which the modern world, without quite knowing its own aim, yet serves in all its activities and labors subconsciously to fulfill. सो ये, यू नो, जैसे अभी गिविंग की बात कर रहे थे ना, कि आई हैव एन अर्ज टू गिव ऑल्दो इट इज स्टिल कनेक्टेड टू माई सेंस ऑफ सेल्फ एंड गिव मी ego aggrandization, yet this serve to self, even if impurified, is helping serve others, you know, so yet serves in all activities and labors subconsciously. So subconsciously it's like a urge to serve and be connected to people, huh? But since it's mixed with the ego consciousness, it is impurified and not purified, and yet it serves the aim. That's the beauty, that no matter where I am in my progress, no matter how pure and impure I am, yet universe finds its ways that it serves some or the other way. Should I move ahead? मैं सोच रही हूँ कि यहाँ छोड़ें, क्योंकि अभी टाइम होने वाला है, तो यहाँ Okay. इस पैराग्राफ पे भी छोड़ सकते हैं, बिकॉज देन इट विल बी गुड टू, बोलो, ठीक है. आप बताओ, या हाँ शुरू हाँ, करना that's है? fine. हाँ, नहीं नहीं, I think it's better center से, so वो better है. ठीक है, ठीक है. Yeah. Recording off कर दो. तो पेज कौन सा था एक बार फिर से? 18th नहीं 9. एक सेकेंड.
Page 18. Hmm. Page 18.